Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to take the lecture on behalf of Professor Rajiv Nath sir. The topic is antitubercular drugs. Okay. प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहो कि पता रहे कि Yeah, ma'am. तुम लोग को आवाज आ रही है और समझ आ रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. स्पीकर कहाँ लगा है? आ रही है ना आवाज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है तो मैं स्टार्ट करूँ फिर. Yes, ma'am. हाँ जी, मैम. जी मैम. एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है टॉपिक. पहले ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन. ठीक है. ट्यूबरकुलोसिस इज अ ग्रैनुलोमैटस डिजीज. तुम लोग अच्छा नोट डाउन तो नहीं करते, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो है ना? है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो जहाँ ना समझ में आए वही बता देना. Okay, ma'am. Can we have share his presentation from him, sir? Sometimes we start to see their screen. Not difficult. So, tuberculosis is a chronic granulomatous disease. In developing country, it is a major health problem. ये तो सबको पता ही है. डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली जो पुअर कंट्रीज हैं और डेवलपिंग मतलब इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है. पर इंडिया से भी जो नीचे की कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा है. ठीक है. क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस से मतलब समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, रिस्पॉन्ड तो करो तुम लोग. नो मैम. नहीं, ma'am. क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा हो. ठीक है. और ग्रैनुलोमैटस मतलब उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ग्रैनुलोमैटस एक ग्रैनुलोमा बनता है. ठीक है. 30% of population is infected by Microbial tuberculosis infection. In India, greater than 2 million people develop active disease every year and 500,000 die. तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग को एक्टिव डिजीज ट्यूबरकुलर डिजीज होता है हर साल इंडिया में. उसमें से 500,000 एक्सपायर भी कर जाते हैं. ये डायग्राम है. वैसे तो ऐसे फास्ट पे लाया होता है बट इसमें शोइंग के शेयरिंग. ये ग्रैनुलोमा का डायग्राम है. ठीक है. एंजाइम सेल ग्रैनुलोमा जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस में जब हम स्लाइड बना के देखेंगे किसी जैसे लिम्फ नोड में है या लंग्स में है तो जब हम स्लाइड बना के देखेंगे तो हमें ऐसे ग्रैनुलोमा मिलेगा. और ये इस ग्रैनुलोमा की कंपोजिशन होती है ये अंदर से केसिएटिंग होता है. केसिएटिंग मतलब चीज जैसा था. ठीक है.
और लैंगरहैंस जाइंट सेल्स और एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस से बन के मिलके बनता है। ठीक है, Langerhans giant cells, epithelioid cells, fibroblasts, and macrophages. It is an infection difficult to treat. Typical growth characteristics: peculiar cell wall structure, waxy appearance due to mycolic acid. इस बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड होता है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इमर्जेस क्विकली। ये तो सबको ही पता होगा कि बहुत रैपिडली एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है। पता है किसी को ये, या फीडबैक तो दो तुम लोग, मुझे पता तो चलेगा कि तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। कि तुम लोग सुन भी रहे हो कि बस ऑन करके चले गए? नो मैम। अच्छा, तो ये पता है सबको कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है बहुत ही रैपिडली एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. चलो, antitubercular drugs for mycobacterial infection. The common infectious sites are lung is the primary site, otherwise brain में हम सुनते हैं tubercular meningitis, बोन में tubercular infection हो जाता है, liver, kidney, intestinal tuberculosis के बारे में भी सुना होगा, lymph nodes में भी इन्फेक्ट करता है तो साइनस बन जाता है, और लिम्फ नोड क्योंकि सुपरफिशियल मतलब डीप नहीं होते, जैसे जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं तो वो उनके थ्रू साइनस बनता है और फिर वहाँ से डिस्चार्ज निकलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है एरोबिक बैसिलस है। It's passed from infected humans, cows, bovine, and birds, avian, which is much less common than the human transmission. Antitubercular drugs, tubercular bacilli are conveyed by droplets. Droplets से infection spread होता है. Droplets are expelled by coughing or sneezing, then gain entry into the body by inhalation. ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफ या स्नीज करेगा, और जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और जो उसके सराउंडिंग में है विद इन द रीच की उस तक पहुंच सके, वो इनहेल कर जाएगा ये ड्रॉपलेट्स। Tubercular bacilli then spread to the other body organs by blood and lymphatic system. ठीक है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है अलग अलग ऑर्गन्स में। Tubercular bacilli may become dormant or walled off by calcified or fibrous tissue. ठीक है, ये डोर्मेंट स्टेट में चला भी जा सकता है, अपने चारों ओर कैल्सिफाइड वॉल बना के या फाइब्रस टिश्यू अपने चारों तरफ गैदर करके। कैल्सिफाइड वॉल मतलब जिसमें कैल्शियम हो। It's a gram-positive acid-fast bacillus, spreads from person to person via airborne droplets, coughing, sneezing, speaking. It all disperses the organism and it can be inhaled by others.
not highly infectious, requires close, frequent and prolonged exposure. ठीक है, जैसे हमें पता है कि अभी जो कोरोना वायरस है वो हाईली इन्फेक्शियस है ना? अभी सब मास्क लगा के घूम रहे हैं. कोई रिस्पॉन्ड करेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो कोरोना Yes, वायरस के ma'am. बारे में पता है कि वो हाईली इन्फेक्शियस है. Yes, ma'am. मास्क लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम चल रहे हैं, बट ये हाईली इन्फेक्शियस नहीं है. इसके लिए क्लोज कॉन्टैक्ट जो कि बहुत बार बार हो और लंबे टाइम के लिए एक्सपोजर हो तभी ये इन्फेक्ट कर पाएगा. Cannot be spread by hands, books, glasses, dishes or other fomites. जबकि हमारा ये कोरोना वायरस इन सब चीजों से स्प्रेड कर जाता है. तो clinical manifestation, early stages are free of symptoms. Many cases are found incidentally. Systemic manifestation are fatigue, malaise, anorexia, weight loss, low-grade fever, night sweats. Weight loss occurs late, characteristic cough, frequent and produces mucoid or mucopurulent sputum. ठीक है, डल और टाइट चेस्ट पेन. शाम को बुखार चढ़ता है यूजुअली. ये तो पता होगा. ट्यूबरक्लोसिस का बुखार शाम को चढ़ता है. माइल्ड लो ग्रेड फीवर होता है. नाइट स्वेट्स आते हैं. ठीक है, और खांसी तो आएगी. पेशेंट को खांसी के साथ स्पुटम भी आएगा. In some cases there is acute high fever, chills, general flu-like symptoms, pleuritic pain, productive cough. HIV patient with tuberculosis, they show fever, cough, weight loss, and pneumocystis carinii pneumonia. ये HIV patients में होगा. ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं हम. पॉजिटिव रिएक्शन जो है 2 से 12 हफ्तों में रिएक्शन 12 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन. अच्छा, इन्फेक्शन होने के 2 से 12 हफ्ते बाद हमें ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का रिएक्शन मिल पाए. PPD is purified protein derivative. It is used to detect delayed hypersensitivity response. Two-step testing. It is done by healthcare workers. अगर तो इंड्यूरेशन जब हम इंजेक्ट करते हैं उसके बाद रेडिश कलर का जो है एक राउंड शेप में रेडिश कलर का इंड्यूरेशन बनता है. अगर वो 5 mm से ज़्यादा है तो पेशेंट इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है. 10 mm से ज़्यादा है तो एट रिस्क पॉपुलेशन. और अगर 15 mm से ज़्यादा है तो लो रिस्क पॉपुलेशन. ठीक है. चेस्ट एक्सरे यूज्ड इन कंजंक्शन विद स्किन टेस्टिंग. Multinodular lymph node involvement with cavitation in the upper lobes of lungs. लंग में कैविटीज बन जाती हैं. ठीक है, जो कि एक्सरे पे बहुत अच्छे से दिखती हैं. Bacteriological studies, sputum gastric washing, early morning specimen for acid fast bacilli are taken. 3 consecutive cultures on different days. हम क्या करते हैं, स्पुटम और गैस्ट्रिक वॉशिंग्स लेते हैं और इनमें हम अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन देते हैं. ठीक है, कल्चर के लिए. CSF of pus from the abscess can also be taken.
rapid growers in the wall of cavitary lesion extracellular, slow growers, ये माइक्रोबैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, कुछ स्लो ग्रो करते हैं, कुछ स्पर्टर्स होते हैं, कुछ डोर्मेंट रहते हैं। तो रैपिड ग्रोअर्स जो हैं दे आर इन द वॉल ऑफ द कैविटरी लीजन एंड आर एक्स्ट्रासेलुलर। स्लो ग्रोअर्स जो है इंटरसेलुलर होते हैं विद इन द मैक्रोफेज ऑफ इन्फ्लुएंस साइट। स्पर्टर्स जो है इंटरमिटेंट ग्रोथ स्पर्ट्स शो करते हैं, बीच बीच में एकदम से ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर रैपिडली ग्रो करना शुरू करते हैं। Dormant do not grow for long time because active at times of low host resistance. Bacilli continuously shift from one to another subpopulation. ये माइक्रोबैक्टीरियन सेल वॉल है, ठीक है। इसमें हमें माइकोलिक एसिड दिख रहा है, इस पे फोकस करना है कि इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। ये बाहर से अंदर की तरफ है, ये आउटर लेयर है, ठीक है, सरफेस। सुपरफिशियल लिपिड्स हैं ये, उसके बाद माइकोलिक एसिड आ रहा है। तो मेरी बंद हो जाती है क्या? यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से शेयर करो। ये बच्चे, हाँ ये बच्चे स्टूडेंट्स। अच्छा, मतलब ये कोई और प्रेजेंटेशन? ये लोग अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने लगते हैं। अच्छा, तुम लोग अपनी स्क्रीन मत प्रेजेंट करो प्लीज, ठीक है? प्रेजेंटेशन रुक जाता है उससे। यस मैम। फिर ये आए किसी ने, ठीक है। सुपरफिशियल लिपिड्स थे, मैकोलिक एसिड था, उसके बाद अराबिनोग्लाइकन है, फिर ग्लाइकन है, फिर सेल मेम्ब्रेन है सबके अंदर। Chemotherapy in tuberculosis, goals of antitubercular chemotherapy are killing the dividing cells, to kill the persisting bacilli and prevent emergence of resistance, ठीक है। तो डिवाइडिंग बेसिलाई को मारना ये एक एम है, और जो परसिस्टिंग बेसिलाई हैं जो डोरमेंट पड़े रहते हैं या स्पर्टर्स हैं या स्लो ग्रोअर्स हैं उनको मारना है, और जो ये रेजिस्टेंस डेवलप होती है उसका कोशिश करना है कि वो ना डेवलप हो। तो killing dividing bacilli, patient is non-contagious, transmission of tuberculosis is interrupted. Killing the persisting bacilli to effect cure and prevent relapse. Prevent emergence of resistance so that the bacilli remain susceptible to the drugs. Antitubercular agents. Now there is emergence of multi-drug resistance, which is called MDR, multi-drug resistant tuberculosis, more than 0.4 million cases globally. ये 0.4 मिलियन केसेस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। मतलब मल्टी ड्रग मतलब एक से ज्यादा ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। हिस्ट्री, फर्स्ट सक्सेसफुल ड्रग फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस वाज PAS, para-aminosalicylic acid, developed by Lehman in 1943. Dramatic success came when Waxman and Schultz discovered streptomycin, which has made remarkable progress. तुम लोग अपना क्या तनवीर आलम कौन है?
तनवीर आलम कौन है तुम लोगों में दो से? दो बार शेयर कर चुके हैं। अपने अपने स्क्रीन मत शेयर करो, ठीक है? तनवीर आलम आप 2 बार कर चुके हैं और दोबारा मत करिएगा। नहीं पढ़ना है तो बता दो। They made streptomycin, which has made remarkable progress, followed by thiazolone by Domag in 1946. In 1952, isoniazid came into being, pyrazinamide by Kushner and colleagues. In 1952, later on, rifampicin was developed. Ethambutol came in 1961. Fluoroquinolones, newer macrolides, and congener of rifabutin are recent addition in the antimicrobial drugs. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या हैं? HRZES, पहले S नहीं था, अब S है, HRZ। तो फर्स्ट लाइन है HRZES, H is for isoniazid, R rifampicin, E ethambutol, Z is pyrazinamide, and streptomycin S. It is now reserved drug in first line, streptomycin. Second line drugs, thiaestazone, para-aminosalicylic acid, ethionamide, kanamycin, cycloserine, amikacin, capreomycin. ठीक है, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। न्यूएस्ट सेकेंड लाइन ड्रग्स ये हमारे ओफ्लॉक्स, लीवोफ्लॉक्स वाला ग्रुप है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफेब्यूटिन, ये न्यूएस्ट सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। Drugs used in tuberculosis, first line high. The first line drugs में high efficacy है और low toxicity है। Second line drugs में low efficacy है और high toxicity है। ठीक है, तो first line वही HRZES, second line ethionamide, para-aminosalicylic acid, cycloserine, amikacin, capreomycin, fluoroquinolones और rifabutin. Antituberculosis, isoniazid, isonicotinic acid, hydrazide, सब दूसरा नाम है, ठीक है, आइसोनियाजिड का। आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड और सिंबल है H, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल एंटी टीबी रेजिमेन एक्सेप्ट इंटॉलरेंस टू H और रेजिस्टेंस। आइसोनियाजिड के लिए अगर रेजिस्टेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज आइसोनियाजिड इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंटीट्यूबरकुलर रेजिमेन. It is tuberculocidal, kills fast multiplying organism. ठीक है, डोर्मेंट वालों को नहीं मारता है, जो फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उन बेसिलाई को मारता है. एंड inhibits slow acting organisms, acts both on intracellular, present in macrophages, and extracellular bacilli. It is the cheapest anti-tubercular agent. Atypical microbacteria are not limited by INH, not active against any other microorganism. Mechanism of action: it inhibits the synthesis of mycolic acid, which is a unique fatty acid component of mycobacterial cell wall. Anti-tubercular agent INH, INH जो है enters the bacilli by passive diffusion. It must be activated to become toxic to bacilli. It becomes toxic by CAT-G,
multifunctional catalase, peroxidase, a bacterial enzyme, okay, which catalyzes the product from INH and isonicotinoyl radical that subsequently interacts with microbacterial NAD and NADP to produce dozen of adducts. One of these nicotinoyl NAD isomer, which decrease the activity of enoyl acyl carrier protein reductase INHA and beta ketoacyl carrier protein synthase Cas-A. Inhibition of these enzymes decrease the synthesis of mycolic acid, an essential component of microbacterial cell wall, and causes cell death. जो माइकोलिक एसिड को बनने से रोकती हैं, ये जब माइकोलिक एसिड नहीं बन पाता है तो वो के एक एसेंशियल कंपोनेंट सेल वॉल का वो नहीं बन पाता है तो सेल मतलब बैक्टीरियल सेल वो डाई कर जाता है. Mechanism of action of first line drugs: mycolic acid, arabinogalactans, peptidoglycan, cell membrane, mitochondria, आइसोनियाजिड जो है वो माइकोलिक एसिड को बनने से रोकती है. पायरेजिनामाइड जो है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करता है. रिफैम्पिन जो है आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है. ठीक है. थैम्बिटॉल जो है अराबिनोग्लैक्टान और पेप्टिडोग्लाइकैन को बनने से रोकता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस को होने से रोकती है. ये इन सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग्स है. Antitubercular agent. If INH is given alone, inherent resistant bacilli proliferate selectively, and after 2 to 3 months, an apparently resistant infection emerges. अगर INH अलग से सिर्फ अकेले दे दी जाए और बेसिलाई में रेजिस्टेंस होगा तो जो जिनमें रेजिस्टेंस होगा वो अलग से प्रोलिफरेट करना शुरू कर जाएंगे और 2-3 महीने में रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा. Combination therapy with INH has good resistance preventing action. There is no cross resistance. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है rather than कि आप सिंगल ड्रग दे रहे हो और एक ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो दूसरे ड्रग के अगेंस्ट उसी मैकेनिज्म से रेजिस्टेंस होगा. ऐसे नहीं है. क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है. Typical agent pharmacokinetics, they completely absorbed orally, penetrate all body tissue, tubercular sites, placenta and meninges, metabolize in liver by acetylation and metabolites and excited in urine. Rate of acetylation shows genetic variation. ठीक है. जो एस्टाइलेशन है उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो फास्ट एस्टाइलेटर्स होते हैं, कुछ स्लो एस्टाइलेटर्स होते हैं. ये जेनेटिक वेरिएशन है. और ये जो ड्रग्स हैं वो एस्टाइलेशन के द्वारा लीवर में मेटाबोलाइज हो रही हैं और जो फास्ट एस्टाइलेटर्स होंगे उनमें ये ड्रग्स जल्दी से मेटाबोलाइज कर जाएंगे. ठीक है. उनमें की हाफ लाइफ है 1 घंटा. जो स्लो एस्टाइलेटर्स हैं उनमें ये देर से डिग्रेड करती हैं और टी हाफ लाइफ है स्लो एस्टाइलेटर्स में 3 आवर्स. बहुत लंबी स्लाइड है, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो थोड़ा फटाफट करेंगे. ठीक है. Antitubercular agents, daily regimen is not effective but bi-weekly regimens are less effective in fast acetylators. ठीक है.
Dose is 4 to 6 milligram per kg for greater than 50 kg, 300 milligram daily or 600 milligram bi-weekly. डोज है आइसोनियाजिड फार्माकोकाइनेटिक्स है एस्टाइलेशन आइसोनियाजिड जो है एन एस्टाइल आइसोनियाजिड में कन्वर्ट होता है एन एस्टाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में जो कि फर्दर आइसोनिकोटिनिक एसिड और एस्टाइल हाइड्रोजीन में कन्वर्ट होता है। तो ये दो फेजेस हैं, एक हाइड्रोलिसिस फेज और एक एस्टाइलेशन फेज। ये हम हाईलाइट किया है एनेस्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि आरएनएच आइसोनियाजिड को डिग्रेड करता है और इस स्टेप को हम एस्टाइलेशन फेज टू जो रिएक्शंस होते हैं उस ग्रुप में आता है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म अफेक्ट्स आरएनएच मेटाबॉलिज्म। So slow astylators are at higher risk of developing neuritis. स्लो डायलेटर्स होंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, न्यूराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंटीट्यूबरकुलर एजेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, वेल टॉलरेटेड ड्रग, आईएनएच जो है आईएनएच की बात हो रही है अभी, आइसोनियाजिड की। Peripheral neuritis and other neurological manifestation like paresthesia, numbness, mental disorientation, and rarely convulsions they develop due to interference with utilization of pyridoxine and increased excretion in urine. Due to this, pyridoxine is given prophylactically 10 mg per day which will prevent neurotoxicity. आइसोनियाजिड के साथ हम pyridoxine देंगे क्योंकि आइसोनियाजिड के केस में अब pyridoxine की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो जब आइसोनियाजिड दिया जा रहा है तो उसके साथ रेगुलरली 10 mg पर डे डोज से हम pyridoxine देंगे। It also causes hepatitis, more common in older patients and alcoholics, rash, fever, acne and arthralgia. A tubercular agent rifampicin now. थर्ड ड्रग पे आ गए हम, HRZE। रिफैम्पिसिन पे है आर वाला, सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफैमाइसिन बी फ्रॉम Streptomyces mediterraneae, bactericidal to Mycobacterium tuberculosis and others. Others like Staph aureus, meningitis, Haemophilus influenzae, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus and Legionella. ये इनके अगेंस्ट भी एक्ट करता है। Best action on slowly or intermittently dividing bacilli. INH जो है वो rapidly multiplying bacilli पे एक्ट कर रहा था, इस slow intermittently dividing bacilli पे एक्ट कर रहा है, which acts extracellular as well as intracellular organism. Also acts on many atypical microbacteria, have good resistance preventing action. Mechanism inhibits DNA dependent RNA synthesis, जो अभी इस डायग्राम में पहले दिखाया था, by decreasing bacterial RNA polymerase selective because does not decrease mammalian RNA polymerase. TB patients usually do not get primary rifampicin resistance if occurs is due to mutation in the RIPO-B gene, beta subunit of the RNA polymerase. No cross resistance again. Now approved drugs, this is super, and pharmacokinetic, well absorbed orally, widely distributed in the body, penetrates cavity, cases mass, placenta and meninges, metabolized in liver, excreted mainly in bile and some in urine. The half-life is 2 to 5 hours. Adverse drug reactions are hepatitis, respiratory syndrome, purpura,
hemolysis, shock, and renal failure. Cutaneous syndrome, flu syndrome, urine and secretion may turn red, which are harmless, and patients should be told about this effect. Uh, Drug indication: rifampicin is microsomal enzyme inducer. It increases several cytochrome P450 enzymes. Inducer. It also metabolizes as well as of others. For example, oral contraceptive, warfarin, steroids, sulfonylureas, digoxin, theophylline, metoprolol, fluconazole और ketoconazole. ठीक है? Contraceptive failure can occur if given simultaneously in childbearing age women taking oral contraceptive. अगर उसके साथ दे दी जाएगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा. Other uses: atypical mycobacterial infection, leprosy, prophylaxis of meningococcal and H. influenza meningitis, MRSA, methicillin-resistant Staph aureus, diphtheroids and Legionella infection, along with doxycycline. The first line therapy in brucellosis. Now pyrazinamide. Chemically, it is identical to INH. Weak tuberculosis, more active in acidic media, more lethal to intercellular bacilli, and to those at site showing an inflammatory response. With sterilizing activity, its use enable total duration of therapy to be shortened and risk of relapse to be reduced. Mechanism of INHs: decrease fatty acid synthesis, but by interacting with different यही ज्यादा है बार-बार. उसको बोल दिया तो भी. Good sterilizing activity. Its use enable total duration of therapy to be shortened, risk of relapse to be reduced. Mechanism of INHs: decrease fatty acid synthesis, but by interacting with different fatty acid synthesis encoding genes. Pyrazinamide is thought to be Mycobacterium tuberculosis by passive diffusion and converted to pyrazinoic acid by bacterial pyrazinamidase enzyme. This metabolite inhibits microbacterial fatty acid synthase, one enzyme, and disrupts mycolic acid synthesis needed for serval synthesis. Pharmacokinetic: absorb orally, widely distributed, good penetration in CSF, metabolized in liver, excreted in urine, half-life is 6 to 10 hours. Ethambutol, clinically active as streptomycin. Fast multiplying bacteria are more sensitive, also act against atypical mycobacteria. A fatty triple regimen is found to hasten the rate of sputum conversion and to prevent development of resistance. Mechanism not well understood: found to decrease arabinosyl transferase 3 involved in the arabinogalactone synthesis and also interfere in mycolic cooperation in mycobacterial cell wall. Resistance develops slowly, no cross resistance. Pharmacokinetic: 3/4 of the oral dose of ethambutol is absorbed, distributed widely, but penetrates meninges incompletely. Half metabolized, excreted in urine. Caution is required in patients with renal diseases. Patient acceptability is good and side effects are low.
Neurological changes, hyperuricemia is due to interference with urate excretion. Doses 15 to 20 milligram per kg, greater than 50 kg patient में 1000 milligram dose is used. Streptomycin was first clinically useful antibiotic drug. It is a protein synthesis inhibitor by combining with 30 ribosome. It is tuberculocidal but less effective than NH and rifampicin. Acts on extracellular bacilli only, poor penetration in cell. Thiazolone, its first antitubercular drug tested but weak, discarded due to hepatotoxicity. A tuberculostatic does not add to the therapeutic effect of HSRE. ADRs, hepatotoxic exfoliative dermatitis. Drug reactions are hepatotoxic exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome can cause bone marrow depression, nausea, anorexia, abdominal discomfort. Loose motions, mild anemia, pruritus. Doses 150 milligram OD, 2 to 5 milligram per kg. Used in combined tablets with INH. Basis of multi-drug therapy, INH, rifampicin and streptomycin. They stop the rapid growers. Slow growers को INH, rifampicin, thiametol और pyrazinamide. Dormant वालों पे no drug is effective. Spotters पे rifampicin is effective. Antibacterial attack against all subpopulation of bacilli. Mechanisms of resistance unable to penetrate the cell wall. Low pH renders drug inactive. Drug exported from cell before it reaches target. Mutation in DNA, repair gene, alteration of target protein structure, prevents drug recognition, alteration of enzyme conversion of raw form pyrazinamide. Relative activity of first-line drug NH potential potent bactericidal, rifampicin potent bactericidal, pyrazinamide weak bactericidal, acting against intracellular bacilli. Ethambutol is bacteriostatic, prevent resistant development. Streptomycin bactericidal, active against extracellular rapid growers. Para-aminosalicylic acid, it is related to sulfonamide chemically as well as in mechanism of action. Tuberculostatic, not added to therapeutic value, only delay resistance. Side effects are acceptability is poor due to fecal anorexia, nausea, and epigastric pain. Other use are in goiter, liver dysfunction, and blood dyscrasias. Dose is 10 to 12 gram or 200 milligram per kg per day. Rarely used now. Furanamide, having moderate efficacy, it is a tuberculostatic drug. Acts both on extra and intracellular. Is developed rapidly and can cross resistance to Using the only distributed all over, including CSF. And side effects were anorexia, nausea, vomiting, rashes, hepatitis, peripheral optic neuritis. Important है. Seldom used now, only used in recent cases. Sinus toxicity is high, sleepiness, headache, tremors, psychosis, and convulsions. Rarely used. Dose is this. Kanamycin, amikacin, and caprimycin used as reserve drug in severe cases not responding to usual therapy. Kanamycin, amikacin, they are used as a reserve drug in severe cases.
A typical agent newer ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin are used in tuberculosis and MAC. Clarithromycin, azithromycin used in MAC. Antitubercular therapy, treatment of tuberculosis, remarkable change, conventional 1 to 1.5 year treatment is replaced by more effective and less toxic 6 to 8 month therapy, rapidly growing with higher bacillary load. For example, wall of the cavity region, highly susceptible to INH and lesser extent to RES, slow growing intercellular and at inflamed site vulnerable to Z, that is pyrazinamide. Pertus, ये हम पढ़ चुके हैं, टॉर्मेंट में कोई एक नहीं काम करती. Antitubercular therapy goals: killing of dividing bacilli, drugs with bactericidal properties rapidly reduce the bacterial load in the patient and achieve quick sputum clearance. Transmission is interrupted. Killing of persistent bacilli for effective cure and prevention of relapse, prevent emergence of resistance. HNR most efficacious drug. The combination is synergistic. ये भी important है. Duration of therapy shortened from 12 to 9 months. Addition of Z for initial 2 months further reduces duration of treatment to 6 months. DOT, directly observed treatment short course, was recommended by WHO. Thoughts. Short course chemotherapy, it's a 6 to 9 months treatment. WHO framed clear-cut guidelines for different category of TB treatment. All regimens have initial intensive phase of 2 to 3 months followed by continuous phase for last 4 to 6 months. एक intensive phase होता है, एक continuation phase होता है. ठीक है, पहले intensive phase होता है, फिर continuation phase होता है. Categories: Category 1, new untreated smear positive pulmonary tuberculosis, new smear negative pulmonary tuberculosis, and new cases of severe form of extrapulmonary tuberculosis, bilateral or extensive pulmonary pleural effusion, intestinal and gastrointestinal tuberculosis. Category 2, smear positive, failure, relapse and interrupted treatment cases. Relapse cured tuberculosis patient become again become sputum positive. They are the relapsers जो ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से पॉजिटिव आ गए. कैटेगरी 3, न्यू केसेस, negative pulmonary tuberculosis, limited parenchymal involvement. For example, lymph node TB, netted pleural effusion, bone, peripheral joint and skin tuberculosis. Antitubercular tubercular therapy, WHO initial phase, 2HRZ, initial phase, 4HR or 6HE daily, total duration 6 to 8 months. INTPC, INTCP, initial phase में 2H3R3Z3, continuation phase में 4H3R3 daily, total duration is 6 months. Category wise treatment दिखाया गया है इसमें. इसको छोड़ो. Antitubercular therapy, DOTS plus, refers to DOTS program, which include component of multi-drug resistance tuberculosis, its diagnosis, management and treatment. It began in 2000 by WHO and implemented in India in 2010. DOTS plus, and this category 4 is created.
Peripherous chronic cases who have remained or become smear positive after completing fully supervised treatment, close contact of most likely MBR cases. MBR tuberculosis is resistant to both H and R and many other anti-TB drugs. तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो फटाफट आए करते हैं। ये बहुत सारे स्लाइड्स हैं। Chronic presence of association of AIDS, diabetes, leukemia, silicosis. If sensitivity of drug known, then resistance drugs are excluded from H resistance RZD for 12 months. For H and R resistance ZD plus S of kanamycin, tetromycin, ciprofloxacin, ofloxacin, thionamide can be used. Extremely drug resistant tuberculosis. Now applied to the slide that are resistant to at least 4 most effective title drugs, that is HR, Oflox, one of kanamycin, amikacin, tetromycin. A global survey reveals 20% tuberculosis isolates are MDR, out of which 2% are STR. TB in pregnant women, WHO, HRZ is safe, recommended it 2 HRZ plus 6 HR for 8 months. We can vary late as is streptomycin is contraindicated in pregnant lady. Breastfeeding mothers, quality drugs are compatible. Baby should avoid the infant should receive BCG vaccination and INS prophylaxis. Antituberculosis therapy, indication of glucocorticoids in tuberculosis. In patient glucocorticoids, if at all used, are always used with AT drugs. They are considered in biliary tuberculosis, tubercular meningitis, rapidly filling pleural effusion, tuberculosis. New antituberculosis in clinical trial, linezolid, also known as third line agent. ये अभी क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है, ठीक है। न्यू एंटीट्यूबरकुलर ड्रग इन वैसे rifampin lower guidelines in INTCP guidelines in 2010-2011. Changes in guidelines. Discontinuation of category 3 regimen under INTPC प्रोग्राम, ये अब नया प्रोग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं। Chemoprophylaxis of tuberculosis, prevention of active disease from latent infection, and is indicated by positive Montauk test. Chemoprophylaxis. Standard drug is INH daily for 6 to 12 months or INH plus rifampicin daily for 6 months. If INH cannot be used, rifampicin for 4 months and R and Z for 2 months. MDR, ethambutol, pyrazinamide and fluoroquinolone. Rifaximin is a new and non-synthetic rifamycin approved for traveler's diarrhea, hepatic encephalopathy. The goal of new drug components of global plan for tuberculosis to develop and introduce new tubercular drugs and drugs combination that will result in
shorter stay from more accessible treatment of all form of TB, compatible with ART, suitable for children, easily managed in field. ये 2015 का प्लान है प्रोटीक एजेंट्स तो बनाने ठीक है थैंक यू